So students, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है from cost of capital. The question says Manohar Enterprises has the following capital structure and specific cost for each fund. Calculate weighted average cost of capital using book value weights and market value weights. हमें यहाँ पर sources given है funds के जो कि हैं equity share capital, retained earnings, preference share capital and long term debts. बुक वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है नेक्स्ट कॉलम में विच इज 50,000 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, 13,000 फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए इट इज 12,000 एंड फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स इट इज 25,000. सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में हमें मार्केट वैल्यू भी गिवन है ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड इन द लास्ट कॉलम वी हैव बीन गिवन स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द फंड. Using this information we have to calculate weighted average cost of capital using book value weights as well as market value weights. So first of all we will calculate weighted average cost of capital using book value weights. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, you have to make a table like this. सबसे पहले आप sources of funds लिख लेंगे जो भी आपको question में given है. Book value उसके अगेंस्ट आप लिख लेंगे. This is also given in the question and next column भी आपको question में given है which is specific cost. सबसे पहले आप यहां तक का टेबल कंप्लीट करेंगे. Then we will calculate total after tax cost for each of the fund. अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है हर सोर्स ऑफ फंड के लिए टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट. वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेक बुक वैल्यू जो कि इक्विटी के केस में है 50,000 रुपए इनटू 15%. यू विल गेट 75%, दैट इज टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट. उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स आपको कैलकुलेट करना है. रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए भी आप सेम ही करेंगे, 13,000 इंटू 13% विच इज 1,690. Similarly for preference share capital it is 12,000 into 10% which is 1,200 rupees. Long term debts के लिए भी आप सेम करेंगे which is 25,000 into 6% is equal to 1,500. Once you are done with the table, you have completed all the columns. अब आपको क्या करना है, you need to make a total of book value column and total after tax cost column. So book value column का total आता है हमारा 1 लाख रुपीस and total after tax cost का column का total हमारे पास आता है 11,890 रुपीस. अब weighted average cost of capital आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, you will be using this formula. The formula is total cost dividing it by total funds. Multiply it with 100 and you will get your weighted average cost of capital in percentage form. अगर 100 से multiply नहीं करते हैं still you will get your weighted average cost of capital but that will be in decimal form. तो आप दोनों तरीके से ही निकाल सकते हैं, it will be correct. So total cost जो last हमारा column था in the previous table उसका total हमारे पास आया था 11,890 rupees. Dividing it with total funds that we have in the capital structure that is 1 lakh rupees. Multiplying it with 100 we get weighted average cost of capital as 11.89%. Now similarly we will calculate weighted average cost of capital by using market value weights. So यहाँ पर हमारे पास again sources of funds हमें लेने हैं from the equation जो हमें question में given है in the table. Next we will be writing market values जो कि भी हमें question में given है and then we'll write specific cost for each of the fund. उसके बाद जैसे प्रीवियस टेबल में हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे मार्केट वैल्यू वेट्स. सो हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, सिमिलरली जैसे कि हमने पहले वाले टेबल में किया था, टेक मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई इट विद स्पेसिफिक कॉस्ट. जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में 1 लाख इंटू 15%, टोटल कॉस्ट बिकम्स 15,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में 12,000 इंटू 10% विच इज 1,200 रुपए. Similarly, for long-term debts, it becomes 25,000 into 6%, which is 1,500 rupees. Now we have to make a total of market value, which is 1,37,000, and of total cost, which comes to 17,700. Now applying the same formula which is total cost by total funds into 100. Total cost हमारे पास है when we are using market value weights 17,700 and total funds हमारे पास हैं 1,37,000. Into 100 we get weighted average cost of capital as 12.92% when we are using market value weights.
So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.